Assalamualaikum, dear students. Today our topic is Gumby Cat, class 7th. It is a poem, class 7th. So, dear students, open your books. Unfortunately, I have no books, so please open your books. Let's start the poem. I have a Gumby cat. Her name is Jenny Annie Dots. Her coat is of the tabby kind with tiger strips and leopard spots. All day she sits upon the stairs or on the steps or on the mat. She sits and sits and sits and sits. And that is what makes a Gumby cat. So, dear students, in this line, the poet is saying that he has a cat in his imagination. उसके imagination में एक cat है. I have a Gumby cat. Her name is Jenny Annie Dots. उसके इमेजिनेशन में एक गम्बी कैट है. उसका नाम जो है वो है जेनी एनी डॉट्स. गम्बी मीन्स आराम पसंद, केयरलेस नेचर, क्लमजी. तो हर कोट इज ऑफ द टैबी काइंड विथ टाइगर स्ट्रिप्स एंड लेपर्ड स्पॉट्स. उसका जो फर है ऊपर वाला जो है टाइगर की स्ट्रिप्स और लेपर्ड की तरह स्पॉट्स है. पूरे दिन बैठी रहती है. ऑल डे शी सिट्स अपॉन द स्टेयर्स. ऑल पूरे दिन बैठी रहती है सीढ़ियों पे. पूरे दिन बैठे ही रहती है, इसलिए वो गम्बी कैट बन चुकी है. इसलिए उसका नाम गम्बी कैट है क्योंकि ये पूरे दिन बैठती रहती है. केयरलेस है, केयरलेस नेचर है उसका, क्लमजी नेचर है उसका. पूरे दिन जो है बैठी रहती है. But when the day's hustle and bustle is done, then the Gumby cat's work is but hardly begun. And when all the family is in bed and asleep, and she tucks up her skirts to the basement to creep, she is deeply concerned with the way of the mice. Their behavior is not good. So when she has got them lined upon the matting, she teaches them music, crocheting and tatting. तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड स्टंजा है इसमें क्या है? एंड व्हेन द डेज हसल एंड बसल इज डन. जब पूरे दिन का जो हसल एंड बसल मीन्स बिजी एंड नॉइजी, बिजी एंड नॉइजी. हसल एंड बसल में बिजी नॉइजी डे होता है ना, हर एक घर में हर एक काम करता रहता है. जब डे होता है सब काम करते रहते हैं. घर के लोग जो है वो सब एक काम करता रहता है. दूसरा जो गम्बी कैट है ये आराम से बैठी हुई होती है. मगर जब लोग घर के सब लोग अपने अपने बेडरूम्स में सोने जाते हैं तो गम्बी कैट अपना सामान जो है इसको धीरे धीरे ये कहाँ लेती है? बेसमेंट में लेती है. आहिस्ता आहिस्ता से बेसमेंट में ले जाती है. और इनके घर के जितने भी चूहे होते हैं वो उनसे वरीड होती है, वो उनको पसंद नहीं करती है क्योंकि उनके घर में के जो भी चूहे हैं वो बोल रहे कि इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है. देयर बिहेवियर इज़ नॉट गुड. इनका बिहेवियर अच्छे नहीं है. ये अनसिविलाइज्ड चूहे हैं, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, अच्छे नहीं है. ये उनसे वरीड थी. और सो व्हेन शी हैज़ गॉट देम लाइन अप, जब वो इनको देखती है, जब वो रात को सारे माइस को देख लेती है तो उनको लाइन में बिठा देती है. जो ये गम्बी कैट थी ये इनको लाइन में बिठा देती है. सब चूहों को माइस को ये इनको बिठा देती थी एक लाइन में. फिर क्या करती थी? उनको नाइट को ये टीचर की तरह काम करती है. उनको म्यूज़िक सिखाती. क्रोशेटिंग मीन्स जो ये वूल का जो काम होता है जिससे स्वेटर बुनते हैं. एंड टैटिंग मीन्स जो कॉटन से जो लेसेस बनाते हैं इनको म्यूज़िक सिखाती थी. क्रोशेटिंग सिखाती थी, टैटिंग सिखाती थी. म्यूज़िक आपको पता ही है. क्रोशेटिंग मीन्स जो वूल से हम स्वेटर बनाते हैं. एंड टैटिंग मीन्स जो कॉटन से जो लेस बनाती है उनको सिखाती थी. मीन्स ये रात को एक टीचर की तरह काम करती थी. I have a Gumby cat in my mind. Her name is Jenny Annie Dots. Her equal would be hard to find. She likes the warm and sunny spots. इस स्टंजा में फिर से शायर बोलता है कि मेरे दिमाग में आई हैव ए गम्बी कैट, मेरे दिमाग में गम्बी कैट की कहानी चल रही. उसका नाम है जेनी एनी डॉट्सन. वो पूरे दिन बैठी रहती है, धूप में बैठती रहती है. वो ऐसे बैठती है जैसे कि वो ऐसे बैठती है. ही सिट्स her equal would be hot. She likes the warm and sun. All day she sits beside the hearth
on the bed or on my hat. She sits and sits and sits and sits, and that is what make a Gumby cat. But when the day's hustle and bustle is done, when the Gumby cat work is but hardly begun. تو مینز HEARTH ہرتھ مینز وہ جگہ، وہ کہاں پہ بہتی ہے، وہ جگہ جہاں پہ آگ جلتی ہے. مینز فارن کنٹریز میں ایک کمرے میں ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دن بھر آگ جلتی ہے. یہ بیچ سینٹر میں ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں چولہا ہوتا ہے، چولہا بنا نہیں ہوتا ہے، اوپر سے جو ہم بناتے ہیں وہ ہوتا ہے چولہے کی جیسا چولہا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، ویسے ہی فارن کنٹریز میں ایک جگہ ہوتی ہے وہاں پہ آگ جلتی رہتی ہے. اس کو وہاں پہ اچھا لگتا تھا بیٹھنا، اور آن مائی ہیڈ یا بیڈ کے کنارے بیٹھتی تھی یا میرے ہیڈ کے اوپر بیٹھتی تھی. اور جب اور وہ شی سٹس اینڈ سٹس اینڈ سٹس پورے دن بیٹھی رہتی ہے، اسی لیے اس کو گمبی کیٹ نام دیا گیا ہے. بٹ وین دا ڈیز ہسل اینڈ بسل از ڈن، جب دن اسٹارٹ ہوتا ہے، سبوں کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ دن بھر بیٹھی رہتی ہے. As she finds that the mice will not ever keep quiet, she is sure it is due to irregular diet, and believing that nothing is done without trying, she sets right to work with her baking and frying. She makes them a mouse cake of bread and dried peas, and a beautiful fry of lean bacon and cheese. So far, old Gumby cat, let us now give them cheers on whom well-ordered household depend, it appears. جو یہ مائس ہے یہ بول رہے کہ یہ جو مائس ہے یہ ناٹک کر رہے ہیں، ان کو ریگولر ڈائٹ، ان کو ڈائٹ نہیں ملا ہے، مجھے کچھ مائس کے لیے کرنا چاہے. وہ موس کیک بناتی ہے مائس کے لیے، بریڈ اور ڈرائیڈ بیز کے بیکن بناتی ہے چیز سے. تو سو فار اولڈ گمبی کیٹ لیٹ اس ناؤ گیو 3 چیئرس. ہمیں اولڈ گمبی کیٹ کے لیے 3 چیئرس اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پورا جو گھر ہے گمبی کیٹ پہ ڈپینڈ رہتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہماری جو لیسن ہے، یہ ہماری جو پوئم ہے اسٹارٹ ہوتی ہے. اوکے، تھینکس، ٹیک کیئر.